Musa alayhi salam insisted, explained to them, encouraged them, was quite firm with them, but they were on one stubborn idea of staying here. And that's how they stayed. Of course, Musa alayhi salam gave them bad-du'a. And because of that bad-du'a, they stayed in that that valley, that area for almost 40 years. And in that time, Musa alayhi salatu wasalam left this world and he was buried there. Now, why do I mention this whole story? To emphasize the point that Musa alayhi salam, when he left this world, he was in that specific area. He had not entered the blessed land of Palestine, the blessed land of Al-Quds. And because he had not entered here, therefore his tomb or his resting place, a better word, his resting place could not be in Palestine. But even then, they have created a memorial, a special place with the name of the Memorial Special Place of Musa alayhi salam, so that people could come here and remember this great personality. तो वो जो मकाम है, वहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम नहीं फरमा रहे. मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे इलाके के अंदर है, लेकिन यहाँ उसका नाम ज़ियारतों के अंदर मकाम रखा गया ये बतलाने के लिए कि यहाँ आप अलैहिस्सलाम आराम नहीं फरमा रहे. और इसी तरह बहुत सारे और भी चीज़ें हैं. Similarly, there are many other examples. So that's why when we go to Palestine or when we go to ziyarats, we must keep these sort of things in mind. ये चीज़ें ज़हन के अंदर रखना ज़रूरी होता है. इसी तरीके से वहाँ जब हम फ़लस्तीन गए तो एक जगह का पूरा नाम अल-खलील रखा हुआ है. अल-खलील, और उसका नाम अल-खलील इसलिए रखा गया है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि उनका लक़ब था खलीलुल्लाह, अल्लाह के बहुत ही करीबी दोस्त. क्योंकि अरबी के अंदर दोस्त होने के बहुत सारे मानी हैं. There are many different names given to the word friend in Arabic because of their levels of closeness to the person. So you can have Sadiq, that means a normal friend. You can have a very close friend. But then you can have Al-Khalil. दोस्त को अरबी में बहुत सारे दोस्त के लिए बहुत सारे नाम होते हैं, और मिन जुमला उनमें से सदीक़. इसलिए जब आप जाएंगे हरमैन शरीफैन तो आप सुनेंगे लोगों को एक दूसरे को कहते हैं सदीक़ सदीक़ सदीक़, ये कर लो, सदीक़ ये कर लो, मतलब दोस्त ये कर लो, दोस्त वो कर लो. तो सदीक़ एक आम दोस्त है. और दूसरा वो दोस्त, और एक दूसरा लेवल ये होता है दर्जा कि जो बहुत ही करीब हो. और इस तरह लेवल्स के अंदर जाते हुए खलील उस दोस्त को कहते हैं कि जो दिल के गहराइयों से आपसे मोहब्बत करता हो और आप उससे मोहब्बत करते हो. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम का लक़ब अल-खलील रख दिया था. अल्लाह सुब्हानहु व तआला had given this special name of Al-Khalil to Sayyidina Ibrahim alayhi salam because Allah loved him intensely. When you have immense love for somebody, you call them Khalil, another Khalla, from my heart I love him. तो इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इब्राहीम ये खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं. और फिर अपने बारे में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं हबीबुल्लाह हूँ. हुब जिससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो तो वो खलील से भी ऊंचा दर्जा होता है. दैट्स नॉर्मली वन लेवल अबव खलील. तो सैयदना इब्राहीम अल खलील, उनका वहाँ भी मकाम है हेब्रोन के अंदर. हेब्रोन वो है इज़राइली टेरिटरी के अंदर. तो वहाँ भी हम गए, बहुत सारे मकामात के ऊपर गए. ऐसे करते हैं, कुछ कॉल्स आई हुए हैं, कॉल्स भी ले लेते हैं और फिर अपनी इस सफ़र की थोड़ी बहुत
कारगुजारी भी बतलाते जाएंगे. I'll take some calls and then inshallah we'll go over this Al-Aqsa Safar as well briefly and just mention some of the highlights of it. ऐसे करते हैं, कॉल्स की तरफ जाते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum salam, Sheikh Faisal. How are you, sir? Alhamdulillah, Allah na shukr. And how are you? I am fine, thank you. Your brother Javid from North Wales. MashaAllah, MashaAllah. Just want to welcome you again. I've been watching a couple of your repeat programs for the last 2 weeks, I think. Nice to see you're looking healthy and you're looking beautiful and handsome. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you with a beautiful, healthy life. Ameen. And I hope your operation is getting better day by day. Jazakallah khair for your du'as. I am feeling a lot better now. And the spinal operation is healing well, alhamdulillah. So jazakallah khair. And it's nice when you have brothers and sisters who are keeping me in their du'as, and in my absence they notice the absence. So jazakallah khair. You're welcome indeed. Jazakallah. And if I could also request, it is lovely to hear that you're talking about Palestine and our sisters and brothers and the history of Palestine. But can I also ask you, if you got the time tomorrow, if you can express to our sisters and brothers, viewers in Urdu, in English, that when these naive people who do not know the blessing of the Holy Quran and they are fanatics and they burn them, we should be so proud that that silly person has actually brought to the attention of the world, because all the TVs, they showed it, that he was burning the Holy Quran. So if you remember 9/11, that how many people wanted to know who are these Muslims, because at that time we were always portrayed by the media, terrorists, warmongers. So make dua that all of us Muslims can talk to our workmates, our people who are involved with us, and they say to us, why are you Muslim always being hated? Say, because people are so naive. What they do not know, they fear of unknown. Mm-hmm. So please, I beg you, to mention to them, Sheikh Faisal, that if they can quote some of the blessing in the Quran to their work friends, I think, inshallah, people will understand. The Quran Sharif was ordained unto the Ummah through our beautiful Nabi 1444 years ago. And if they just talk about something so beautiful, people will be taken back. Thank you very much for listening to me. Bhai Javed, most of all, nice to see you again. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. That was Bhai Javed from North Wales, and he's brought up some very, very important points and very valid points, something that hasn't crossed the minds of many people. And especially, I like your point where you said that although we feel hurt by somebody burning the Quran Kareem, और भाई जावेद ने अभी बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी बातें कुछ बतलाई, और उनमें से जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये है कि look towards the positive and take out the positive from anything. स्वीडन के अंदर आपने सुना होगा कि वहाँ उन कुछ आदमियों ने कुरान करीम की बेहुरमती की है. They have disrespected the Quran Kareem in their way, of course, or they have set fire to it. उसको आग लाया, कुरान करीम का नुस्खा था. So, और उन्होंने ये कोशिश की कि हम इसकी बेहुरमती करेंगे और लोग इश्तिआल में आएंगे. So what they were trying to do is, we will disrespect this holy book of the Muslims, the Quran Kareem, and by doing this people will become enraged. लोग गुस्से के अंदर आएंगे. लेकिन उसका दूसरा तरफ भी होता है. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे. फिर मैं अपने असल मौजू के ऊपर वापस आऊँगा. बट दिस इज़ समथिंग रियली गुड, अ वेरी वैलिड पॉइंट, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करूँगा. फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.